Next alphabet H. H-A-E-M-E. Heme. A is silent here. Heme means blood. Hematology means heme means blood and logy means study. So study of blood is called as hematology. Then hemoglobin. Hem blood. Hemoglobin is red colored pigment found in RBC. Next hepat. Hepat means liver. Hepatitis. हिपेटाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर. लीवर का कुछ डिसीज है हिपेटाइटिस. सो हिपैट मीन्स लीवर. नेक्स्ट हेटेरो. हेटेरो मीन्स अदर. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वर्ड हेटेरोट्रॉफ. वी नो मीनिंग ऑफ हेटेरो. हेटेरो मीन्स अदर. ट्रॉफ मीन्स फूड. सो who is dependent on others for food is called as heterotroph. Next homo. Homo means same. See the word homogametes. कोई gametes है और वो homo है, मतलब क्या gametes कैसे है? Same है. तो same gametes are called as homogametes. Next hydro means water. Hydrolysis. Hydro means water. Lysis means break. Break with the help of water. Hyper means high. Hypertension. हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं. हाइपो मीन्स लो. हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर. हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट अल्फाबेट आई. ये वर्ड बहुत बार आएगा, ये अफिक्स आप लोगों को. इंटर. इंटर मीन्स बिटवीन. सो इंटर सेल्यूलर. इंटर मीन्स बिटवीन. इंटरसेल्यूलर मतलब बिटवीन सेल्स. इंट्रा मीन्स इनसाइड. अब इंट्रासेल्यूलर. इंट्रासेल्यूलर मीन्स इनसाइड सेल. इंफ्रा मीन्स बिलो नीचे. इंफ्रा रीनल. रीनल का मतलब होता है किडनी. सो इंफ्रा रीनल मीन्स बिलो किडनी. अगेन आइसो. जैसे हमने होमो देखा था, आइसो का भी मतलब सेम है. आइसो मीन्स सेम. आइसोगैमस मीन्स सेम गैमेट्स. ITIS ऐसा कहीं पे भी आखिरी में अगर आता है ये सफिक्स, देन इट मीन्स इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन हुआ है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस. वी नो मीनिंग ऑफ गैस्ट्रो. गैस्ट्रो मीन्स स्टमक. तो स्टमक का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस. नाउ यू कैन टेल मी हिपैटाइटिस. हिपैट मीन्स लिवर. तो लिवर का इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हिपैटाइटिस. नाउ के. काइनेसिस मीन्स टू स्प्लिट और डिवाइड. साइटोकाइनेसिस. साइटो मीन्स सेल और साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मतलब स्प्लिट होना. तो सेल या फिर साइटोप्लाज्म के स्प्लिट होने को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ऑल ऑफ यू नो. कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. काइनेसिस मतलब स्प्लिट. सो कैरियोकाइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस. अल्फाबेट एल. लैक्टो इज रिलेटेड टू मिल्क. लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है विच इज फाउंड इन मिल्क. मिल्क बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. लैटेरो मीन्स साइड. लैटरल का मतलब होता है ऑन साइड. साइड में जब होता है तो उसको लैटरल बोलते हैं. लूको मीन्स व्हाइट. लूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि साइट्स मतलब सेल्स. लूको व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स. लिंग्यू is related to language or tongue. Lingu मतलब tongue. Hypolingual. Hypo means below. Below lingual. Lingual means tongue. Below the tongue मतलब hypolingual. Lith मतलब stone. तो किडनी में जब स्टोन होते हैं तो एक सर्जरी होती है लिथोट्रिप्सी नाम की. So this is the surgery to crush
the stones, because lith means stone. Lysis, break, hydrolysis, we have already seen. Micro means small, microscope, device through which small organisms can be seen. Microscope, scope means device, micro means small. Macro, large, macrophage. Macrophage is one of type of the WBC. WBC का एक type है, हम लोग देखेंगे आगे के lecture में. Mes, MES, mes means middle, middle. Mesoderm, मिडल लेयर को बोलते हैं mesoderm. मल्टी, many, multicellular means many cells. Myo, MYO, myo means muscles. Myofibril, मसल के सेल को बोलते हैं myofibril. Myco, myco, look at this word myo. This is myo and this is myco. Every time whenever this word will come myco, that means fungus. Myco is related to fungus. Mycorrhiza. Myco means fungus, rhiza means root. Fungus which lives on the roots of the plant is called as mycorrhiza. That's it for today.